This is our question number 8. In this question, again we are using this formula sin 2t equal to 2 sin t cos t, dividing throughout by 2, t by 2. So 2 will get cancelled. Sin t equal to 2 sin t by 2 cos t by 2. So sin t equal to 2 sin t by 2 cos t by 2. This formula we are using in this example. So this example is asked in 2015 and 17 March. Find the dy by dx if x equal to a cos t plus log of tan t by 2 y equal to a sin t. So first we will differentiate x with respect to t. We are differentiating with respect to t here. So a keep as it is. Differentiation of cos t is minus sin t plus log of tan t, log of u, where u is also a function of x, means differentiation of log u is 1 by u du by dx. So 1 by u means tan t by 2. Again differentiation of tan t by 2 is sec square t by 2, and differentiation of t by 2 is 1 by 2. So this is sec square t by 2 into 1 by 2. So keep a as it is, minus sin t is also as it is, plus 1 divided by tan t by 2 को in terms of sin and cos में लिखो, sin t by 2 divided by cos t by 2. अब इसे न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ले लो तो इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t by 2. एक स्क्वायर इसके साथ कट होगा एंड 2 will become remain here. So this equal to a minus sin t plus ये क्या होगा 2 sin t by 2 into cos t by 2 होगा. So we are using this formula here. 2 times this sin t by 2 and this one is cos t by 2. Again this equal to a minus sin t plus ये 2 sin t by 2 cos t by 2 by formula 2 sin t by 2 cos t by 2 ये होगा sin of t, 1 divided by sin of t. So take cross multiplication, a minus sin square t plus 1 whole divided by sin t, and this equal to take cross multiplication, sin into sin, sin square t plus 1. So 1 minus sin square t, 1 minus it will become 1 minus sin square t भी हम इसे लिख सकते हैं. So 1 minus sin square t is cos square t, 1 minus sin square t divided by sin t. This equal to a, ये cos square t होगा because sin square t plus cos square t equal to 1 divided by sin t. ये हमारा dx by dt है. अब y की तरफ आओ, y इक्वल टू a sin t, वेरी सिंपल, dy by dt इक्वल टू a, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t इज cos t. So our dy by dt is a cos t. Next dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. Our dy by dt is a cos t. So write a cos t divided by this term a into cos square t divided by sin t. A will get cancelled, one cos will get cancelled with this one. So cos by 1 divided by cos t by sin t. इसको sin t को ऊपर ले लो, sin t by cos t equal to tan t. This is our answer of this question. Question number 8 का आंसर है tan t by 2. You can note down this one. Next, come to the next question. Question number 9. Question 9 है x equal to a sec theta, b equal to y equal to b tan theta. So
So first differentiation of x with respect to theta. Here theta is given. With respect to theta we are differentiating. Dx by d theta equal to a. Differentiation of sec theta is sec theta into tan theta. Y is given b tan theta. So dy by d theta equal to b. Differentiation of tan theta is sec square theta. So dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Our dy by d theta is this one, b sec square theta, divided by dx by d theta is a sec theta tan theta. So one sec will get cancelled with this one, b sec theta ऊपर बचेगा, sec theta b sec theta divided by a tan theta. sec theta को हम 1 by cos भी लिख सकते हैं. So b by a कांस्टेंट ऐसे ही रखो. राइट sec theta in terms of cos theta 1 divided by cos theta into tan theta is 1 divided by sin theta divided by cos theta. ये cos theta will get cancelled. This equal to b by a. 1 by sin theta is cosec theta. So this is our question number 9. Now come to question number 10. Our question number 10 is find the dy by dx if x equal to a cos theta plus theta sin theta and y equal to a sin theta minus theta cos theta. So first find dx by d theta. This equal to a constant ऐसे ही रखो. Differentiation of cos theta is minus sin theta. And here plus theta sin theta है, where theta is also function of x and sin theta is also function of x. We have to use u into v rule. u into v rule क्या है, u को ऐसे ही रखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v को ऐसे ही रखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u. थीटा ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इज 1. यहाँ पर देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा विल गेट कैंसल. a थीटा कॉस थीटा इज dx by dt. Now come to this one, y equal to a theta minus theta cos theta. So dy by d theta equal to a को ऐसे ही रखो, sin theta का डिफ्रेंसिएशन cos theta माइनस थीटा को ऐसे ही रखो, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin थीटा, वो माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस होगा. फिर ये कॉमन माइनस, cos थीटा को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इज 1. सो a cos थीटा माइनस 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 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा विल गेट कैंसल. सो ए थीटा साइन थीटा. दिस इज dy by d theta. फर्स्ट टेक डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा. थीटा को ऐसे रखो, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, वो माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो गई. फिर ये माइनस कॉमन है, इधर ले लो. थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन, कॉस थीटा को ऐसे ही रखो, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा. सो दिस इज आवर dy by d theta, dx by d theta. Now dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Our dy by d theta is a theta sin theta
divided by dx by dt is dx by d theta is a theta cos theta. Here a will get cancelled, theta theta will get cancelled. Sin theta by cos theta is tan theta. This is our dy by dx. This is example 10. Come to the next question, example 11. This is our example 11. If x equal to a, root of a raised to sin power, it is a raised to sin t, and b equal to y equal to root of a cos inverse t. Show that dy by dx equal to minus y by x. We have to prove. So to prove this one, first we multiply these two x and y terms. Solution, take x into y. Here x is root of a raised to sin inverse t into y is root of a raised to power cos inverse t. अब ये दोनों रूट में है, हम इन सेम रूट, एक ही रूट में हम दोनों को लिख सकते हैं. a raised to sin inverse t into a raised to cos inverse t. So you know a raised to m into a raised to n equal to a raised to m plus n. अगर इंडेक्स सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर इंडेक्स सेम है, इस पावर को हम ऐड कर सकते हैं विद इन रूट. सो रूट ऑफ a raised to sin inverse t plus cos inverse t. So in inverse trigonometric function we have studied sin raised to t plus cos raised to t is here pi by 2. आंसर फॉर दिस वन इज पाई बाई 2. ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, हमें डिफ्रेंशिएट करने बहुत इजी हो जाएगा. x एंड y, वेयर x एंड y आर फंक्शंस ऑफ x. अब ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा. ओनली वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस वन x एंड y. x एंड y, वेयर x एंड y आर बोथ फंक्शन ऑफ x, सो यू हैव टू टेक प्रोडक्ट रूल, दैट इज कीप x एज इट इज. डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx प्लस y को ऐसे ही रखो. डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट. इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ x, इट इज़ फुल्ली कांस्टेंट. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन इज 0. सो x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0. x dy by dx इक्वल टू, ये प्लस वाई इधर लेकर जाओ, 0 माइनस वाई इज माइनस वाई, एंड इन नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट आंसर dy by dx इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय x. दिस इज आवर फुल आंसर. You can take screenshot to solve in your notebook. So this completes exercise 5.7. So अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए.